हाय गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो इस क्लास में हम लोग देखेगा सेल्स मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग, ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में 4 यूनिट्स है और ग्रुप बी में भी 4 यूनिट्स है, तो टोटल हो गया 8 यूनिट्स। तो इस क्लास में हम लोग फुल सिलेबस डिस्कस करेगा और ध्यान रहे आज के क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में किल कर देना है। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है फिर। अच्छा, क्लास चालू करते हैं। यूनिट 1 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? डिफाइन एंड एक्सप्लेन। A sales organization is the part of a business that plans, directs, and controls all sales activities to achieve sales targets. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये बिजनेस का ही एक पार्ट है जो कि प्लान करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। क्या चीज? सेल्स एक्टिविटीज। किस लिए? टू अचीव सेल्स टारगेट्स। मतलब बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सेल्स का टारगेट है कि हाँ इतना हम लोगों को इस महीना, इस साल सेल्स करना है, उसका सारा प्लान, डायरेक्शन, कंट्रोल कौन करता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। इट इंक्लूड्स द सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सेल्स पॉलिसीज दैट हेल्प द कंपनी सेल प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? सबसे पहले सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेल्स पॉलिसीज, ये सारा चीज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है। और ये लोग करता क्या है? मतलब इनका काम क्या है? दे हेल्प द कंपनी टू सेल प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस ऑल सेल्स एक्टिविटीज। मतलब इट एंश्योर्स प्रॉपर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एंड कस्टमर हैंडलिंग, हेल्प्स द बिजनेस इंक्रीज सेल्स एंड रीच कस्टमर्स इफेक्टिवली। नेक्स्ट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन coordinates sales team. मतलब organizes the work of sales managers, sales persons and sales support staff. It ensures everyone works towards the same sales goals. Next, sales organization helps achieve sales targets, creates sales plans, allocates territories, monitors performance and motivates the team. It also ensures the company earns profit through effective selling. Next, what are the main functions of a sales organization? तो यहां पे क्वेश्चन हम लोगों को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। मतलब ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, इसका काम क्या है। तो तुम क्या करेगा? डायरेक्ट फंक्शन पे नहीं आना है, पहले तुमको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का 1-2 लाइन का डेफिनेशन, मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट बताना होता है। ठीक, तो a sales organization performs several functions to manage selling activities effectively and achieve the company's sales targets. तो अब देखता है functions। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सेल्स प्लानिंग। मतलब डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, वेयर टू सेल एंड हाउ टू सेल, हेल्प्स सेट सेल्स टारगेट्स, बजट्स एंड स्ट्रेटजीज। तो पहला फंक्शन क्या है? सेल्स प्लानिंग। मतलब क्या बेचना है, किधर बेचना है और कैसे बेचना है, ये सारा डिसीजंस कौन लेता है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। और कैसे डिसीजन लेता है? बाय सेटिंग सेल्स टारगेट्स, बजट्स एंड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स फोर्स, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग सेल्स पर्सन्स। इट एंश्योर्स द राइट पीपल वर्क इन द राइट मार्केट्स। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स फोर्स। और कैसे? बाय रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग सेल्स पर्सन्स। नेक्स्ट, सेल्स सुपरविजन एंड कंट्रोल, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स पर्सन्स, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव सेल्स एफिशिएंसी। तो यहां बात हो रहा है सेल्स सुपरविजन का और कंट्रोल का। और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये करता कैसे है? by monitoring the performance of salesperson and also by taking corrective actions. किस लिए? To improve sales efficiency. Next, market analysis, studying customer needs, competitors and market trends. It helps the company plan better and understand market demand.
तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मार्केट को एनालाइज करता है और कस्टमर का नीड, कॉम्पिटिटर्स और मार्केट डिमांड को स्टडी करता है, और इससे होगा क्या, कंपनी बेटर प्लान बना पाएगा और साथ ही साथ मार्केट का डिमांड को भी समझ पाएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इट एंश्योर्स products reach customers at the right place, right time and at right price. It includes managing wholesalers, retailers and transport. तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का काम भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ही देखता है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, कि कंपनी का प्रोडक्ट राइट प्लेस तक, राइट टाइम पे और राइट प्राइस में कस्टमर्स को मिले। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होलसेलर्स, रिटेलर्स और ट्रांसपोर्ट, ये सारा चीज इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, प्रमोशंस, डिस्काउंट्स एंड डिस्प्लेज, अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीजेस सेल्स। तो सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, ये भी किसका फंक्शन है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का है। और इसमें लोग करता क्या है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, प्रमोशन, डिस्काउंट एंड डिस्प्लेज, ये सब सारा चीज सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग सपोर्ट के अंदर आ जाता है। और इससे होगा क्या, इससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है और सेल्स को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, यहां तक। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन द मॉडर्न कॉमर्शियल वर्ल्ड। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल टुडे बिकॉज बिजनेसेस फेस इंटेंस competition, changing customer preference and large market. A strong sales organization helps firm survive and grow. तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है और कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होते रहता है। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस को, फर्म को हेल्प करता है टू सर्वाइव एंड ग्रो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस। इट एंश्योर्स एफिशिएंट सेलिंग, organizes all selling activities in a systematic way, helps reach customers faster and increases sales. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे सेलिंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है इन ए सिस्टमेटिक वे और फर्म्स को, बिजनेसेस को हेल्प करता है। कैसे? टू रीच कस्टमर्स फास्टर और साथ ही साथ इन इंक्रीजिंग सेल्स। नेक्स्ट, इट हेल्प्स अचीव्स सेल्स टारगेट्स, सेट्स क्लियर sales goals and ensures the team works to achieve them. It improves overall business performance. तो sales organization मदद करता है। कैसे? In achieving sales targets by setting clear sales goals. और साथ ही साथ ये ensure करता है कि बिजनेसेस के अंदर, फर्म के अंदर टीम वर्क के साथ टारगेट्स को अचीव किया जाए, which improves overall business performance. Next, builds better customer relationships, provides better customer service and quick problem solving, helps increases customer satisfaction and loyalty. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सर्विस और क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर प्रोवाइड करता है, जिससे बिजनेसेस को, फर्म्स को कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी इंक्रीज करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट, सपोर्ट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन, coordinates with advertising, branding and promotional activities, which helps in successful product launches and market expansion. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में और प्रमोशनल एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट्स करता है, मतलब इन सभी चीजों को साथ में लेके चलता है, जिससे प्रोडक्ट लॉन्च करने में और मार्केट एक्सपेंशन करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इट एंश्योर्स smooth coordination among salespersons, distributors and managers, helps monitor sales performance and correct problems on time. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सेल्स पर्सन में, डिस्ट्रीब्यूटर और मैनेजर्स में एंश्योर्स करता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिससे सेल्स परफॉर्मेंस और प्रॉब्लम्स को टाइम पे करेक्ट किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन is vital for modern businesses because it increases efficiency, improves customer satisfaction and help companies compete and grow. Next, who is a sales manager? Defined. A sales manager is the person responsible for planning, directing and controlling the sales activities of a business. He or she supervises the sales team, sales targets,
motivates salespersons and ensures the company achieves its sales goals. तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किसका? सेल्स एक्टिविटीज का। और सेल्स मैनेजर करता क्या है? ये सुपरवाइज करता है किसको? सेल्स टीम को, और सेल्स टारगेट सेट करता है, सेल पर्सन्स को मोटिवेट करता है और एंश्योर करता है कि कंपनी का सेल्स गोल्स अचीव होता रहे। तो सेल्स मैनेजर कौन है? सेल्स मैनेजर इज द लीडर ऑफ द सेल्स टीम। He guides salespersons and helps them perform better, ensures teamwork and smooth functioning of the sales department. Next, planner and decision maker. Prepares sales plans, sales budget and sales strategies. He decides how, where and when selling should take place. तो सेल्स मैनेजर ही सेल्स प्लान्स, सेल्स बजट और सेल्स स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करता है और यह भी डिसाइड करता है कि कैसे, किधर और कब सेलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर मॉनिटर्स सेल्स परफॉर्मेंस, इवैल्यूएट्स रिजल्ट्स एंड टेक्स करेक्टिव एक्शंस, एंश्योर्स कस्टमर रिसीव्स गुड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एफिशिएंटली। तो सेल्स मैनेजर सेल्स परफॉर्मेंस और इवैल्यूएट रिजल्ट्स को मॉनिटर करता है और साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस भी लेता है और एंश्योर्स करता है कि कस्टमर्स गुड सर्विस और प्रोडक्ट्स इफिशिएंटली रिसीव करें। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम ए सेल्स मैनेजर? ए सेल्स मैनेजर नीड्स द राइट एजुकेशन, स्किल्स एंड पर्सनल क्वालिटीज टू मैनेज द सेल्स टीम एंड अचीव सेल्स टारगेट्स efficiently. Next, qualification required. Educational qualifications. A degree in commerce, business administration, marketing or sales. Additional training or courses in sales management or communication are helpful. Next, professional skills. Strong selling skills, product knowledge and market understanding. Ability to make sales plans, strategies and decisions confidently. Next, leadership and communication skills. Should be able to motivate, guide and supervise salespersons. Excellent communication for dealing with customers and the sales team. Next, experience in sales. Practical experience as a salesperson or sales executive is important. Helps understand customer behavior and real market situations. Next, personal qualities. Should be confident, honest, disciplined, hardworking, and result oriented. Must have patience and problem solving ability. Next, what are the duties and responsibilities of a sales manager? A sales manager is responsible for planning, supervising, guiding, and controlling all sales activities. His duties ensure that the company achieves its sale targets effectively. Next, duties of a sales manager. Planning sales activities, prepares sales plans, sale targets, sales budgets and strategies, deciding how and where selling should take place. Next, organizing the sales force, recruits, selects, trains and assigns salespersons, builds an efficient sales team. Next, supervising and guiding sales persons, provides direction, motivation and support to the sales team, helps improve their performance through meeting and guidance. Next, controlling sales operations, monitors sales results, compares them with targets and take corrective actions, ensures proper distribution, pricing and customer service. Next, maintaining customer relations, handles customer complaints and ensures satisfaction, builds long-term relationships with customers and dealers. Next, responsibilities of a sales manager. Achieving sales targets, responsible for meeting the sales goals set by the company. Next, ensuring smooth sales operations, coordinates with marketing, finance, distribution and inventory teams. Next,
developing sales policies, sets rules and standards for selling, discounts and communication. Next, explain the role of sales manager in achieving the sales objectives of a firm. Sales objective refer to the sales targets a company aims to achieve, such as increasing sales volumes, expanding market share, or improving customer satisfaction. The sales manager plays a key role in achieving those objectives. Next, role of a sales manager: setting and planning sales targets. The sales manager sets realistic and achievable sales goals for the team, prepare plans and strategies to meet those targets. Next, building and managing the sales team, selects, trains and motivates salespersons to perform properly, ensures each salesperson understands their responsibilities and targets. Next, supervising and monitoring sales performance, regularly checks sale reports and performance of each team member, takes corrective actions whenever sales declines or goals are not met. Next, coordinating sales and marketing efforts, works with marketing to plan promotions, advertisings and pricing strategies, ensures the right products reach the right markets at the right time. Next, improving customer satisfaction, handles major customer issues and ensures good service, builds long-term customer relationships to increase repeat sales. So, a sales manager helps a firm achieve its sales objectives by planning sales activities, managing the sales team, monitoring performance, and ensuring customer satisfaction. He is central to the company's sales growth and success. Unit 2, Recruitment, Selection and Training of Salesperson. और आज की क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में जाके किल कर देना है, ठीक। और दूसरा बात, क्या नहीं करना है, तो तुमको मोटिवेशन का, मूड का वेट नहीं करना है कि जब मोटिवेशन आएगा, मूड करेगा तब पढ़ाई करेगा, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा बात, तुमको खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, तुमको बस खुद को इंप्रूव करना है और प्रिपरेशन में लगना है। और तीसरा बात, ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया, आज से चालू करेगा तो क्या ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तुम आज से, अभी से भी लग जाता ना तो बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है फिर, अच्छा क्लास चालू करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? डिफाइन। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ finding and attracting suitable candidates for a job in an organization. तो recruitment मतलब finding and attracting suitable candidates. किस लिए? For a job. It helps bring a pool of potential candidates from which the best candidates can be selected. तो recruitment हम लोगों को help करता है, कैसे? बहुत सारे potential applicant में से best candidates को select करने में। Next, attracting applicants. Recruitment aims to invite many candidates so the organization can choose the most suitable person. First step in hiring. Recruitment is the first step in the appointment process, followed by selection and training. तो recruitment appointment process का पहला step होता है, इसके बाद आता है selection और फिर training. Ensures availability of manpower, helps the organization maintain the required number of employees for efficient functioning. Next, what are the sources of recruitment? Sources of recruitment are the places or methods through which an organization finds and attracts candidates for job. तो sources of recruitment में हम लोग प्लेसेस और मेथड्स देखता है जहां से ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को फाइंड करता है, अट्रैक्ट करता है, किस लिए? जॉब के लिए।
These sources are divided into internal and external. तो इसमें पहला आता है internal source of recruitment, मतलब used to fill vacancies from within the organization. मतलब जो भी वैकेंसीज जॉब खाली है उनको ऑर्गेनाइजेशन फिल करता है, और कैसे? पुराने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से ही. नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब यूज्ड टू हायर न्यू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन नए लोगों को हायर करता है फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो अब बात करते हैं कि कैसे इंटरनल रिक्रूटमेंट किया जाता है. तो इसमें सबसे पहले आता है प्रमोशन. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आर promoted to higher positions, encourages employees and boost morale. तो प्रमोशन के अंदर जो भी हायर पोजीशन है उनको फिल किया जाता है. कैसे? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को प्रमोट करके, मतलब जो भी पुराना एम्प्लॉइज है उनको ही प्रमोट कर दिया जाता है और हायर पोजीशंस को फिल किया जाता है. नेक्स्ट, ट्रांसफर. Employees are shifted from one department, branch or location to another. Helps fill vacancies quickly without hiring new staff. तो ट्रांसफर के अंदर एम्प्लॉइज को शिफ्ट किया जाता है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. इंटरनल नोटिफिकेशन और एम्प्लॉय रिकमेंडेशन. Company inform employees about new vacancies through internal notices. Employees may also recommend suitable candidates. Next, external source of recruitment. तो यहां हम लोग देखेगा कि कौन कौन सा एक्सटर्नल सोर्स से ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करता है. तो सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट. वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स और सोशल मीडिया. Attracts a large number of applicants. तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज को एडवर्टाइज करवाता है न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स में और सोशल मीडिया में. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज. प्रोफेशनल एजेंसीज हेल्प फाइंड सुइटेबल कैंडिडेट्स एंड एफर्ट फॉर कंपनीज. तो यहां पे प्रोफेशनल एजेंसीज मदद करता है सुइटेबल कैंडिडेट्स फाइंड करने में, जिससे कंपनीज का टाइम और एफर्ट बचता है. नेक्स्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट. हायरिंग फ्रेश कैंडिडेट्स फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, वॉक-इन्स और जॉब फेयर्स. कैंडिडेट्स विजिट द कंपनी डायरेक्टली फॉर इंटरव्यूज, यूजफुल फॉर क्विक मास हायरिंग. नेक्स्ट, रिकमेंडेशंस एंड रेफरल्स. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज रेफर सुइटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड. नेक्स्ट, explain merits and demerits of internal source of recruitment. So, internal sources refer to filling vacancies by selecting candidates from within the organization, such as promotions, transfers or internal notices. तो पहले देखता है merits of internal resources, cost effective and time saving, no advertising or external hiring expenses. वैकेंसीज आर फिल्ड क्विकली. तो जैसे कि इंटरनल सोर्स में ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वैकेंसीज को फिल करता है. और कैसे करता है? फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पुराने एम्प्लॉय से ही वैकेंसीज को फिल कर लेता है. कैसे? बाय प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और इंटरनल नोटिसेस के द्वारा. तो ये जो तरीका है वैकेंसीज को फिल करने का, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग होता है. क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत है और ना ही कोई एक्सटर्नल हायरिंग का खर्च होता है. नेक्स्ट, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल. एम्प्लॉइज फील मोटिवेटेड व्हेन दे सी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, एनकरेजेस लॉयल्टी एंड गुड परफॉर्मेंस. और इंटरनल सोर्स से जो पुराने एम्प्लॉइज है उनका मोरल बूस्ट होता है. दे फील मोटिवेटेड जब उनको प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी दिखता है. नेक्स्ट, रिलायबल एंड नोन कैंडिडेट्स. Internal employees' performance and abilities are already known, reduces the risk of wrong hiring. Next, demerits of internal sources. Limited choice. Only existing employees can apply, reducing the availability of fresh talent. तो internal source में सबसे पहला डिमेरिट है कि यहाँ पे लिमिटेड चॉइस रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, मतलब पुराने एम्प्लॉइज को ही अप्लाई करने को देता है. तो इससे होता क्या है? जो फ्रेश टैलेंट है वो अवेलेबल नहीं होता है. नेक्स्ट, क्रिएट्स इंटरनल कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट.
employees may feel jealousy or rivalry during promotions. No new ideas or innovation. Hiring from within may lead to lack of creativity and fresh perspectives. Next, explain merits and demerits of external source of recruitment. So, external sources fill vacancies by hiring candidates from outside the organization through advertisement, job portals, agencies, campus, etc. तो पहले देखता है merits of external sources. Availability of fresh talent brings new ideas, creativity, and modern skills into the organization. Useful when internal employees lack required abilities. तो external sources में organization vacancies को कैसे fill करता है? By hiring candidates from outside the organization. मतलब यहाँ पे नए लोगों को रिक्रूट किया जाता है और कैसे? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जॉब पोर्टल्स, एजेंसीज, कैंपस. तो अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स का मेरिट का बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश टैलेंट. मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश टैलेंट आता है, नया लोग आता है, तो वो लोग नया आइडिया लेके आता है, क्रिएटिविटी लेके आता है और मॉडर्न स्किल्स भी वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आता है. वाइडर चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स. Large pool of candidates from different backgrounds and experiences increases chance of selecting the most suitable candidate. Next, reduces internal conflicts, avoids jealousy or competition among existing employees regarding promotions. Next, demerits of external sources. Costly and time consuming. Requires money for advertisement, interviews, and screening. Takes more time to finalize candidates. Next, higher risk of wrong selection. External candidates' real abilities and behavior may not be fully known. Next, lower morale of employees. Existing employees may feel discouraged if outside candidates are hired instead of promoting them. Next, what is selection? Define. Selection is the process of choosing the most suitable candidate from the pool of applicants generated through recruitment. तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को वैकेंसीज फिल करना होता है तो वो सबसे पहले करता है रिक्रूटमेंट. मतलब कैंडिडेट्स को फाइंड करता है, अट्रैक्ट करता है कि वो लोग वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें. तो रिक्रूटमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा एप्लीकेशन आता है. इसके बाद चालू होता है सिलेक्शन, जहां पे मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है. ये जो बहुत सारा एप्लीकेंट्स आया हुआ है रिक्रूटमेंट के थ्रू, यहां से मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है. इट एम्स टू पिक द पर्सन हु बेस्ट फिट्स द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट candidates from many applicants. The organization selects the one most qualified based on tests and interviews. Selection involves screening, interviews, tests, and background checks. Ensures right person for right job. Helps avoid wrong hiring and improves efficiency. Next, explain the selection procedure of a salesperson. Selection procedure refers to the step-by-step process used to choose the most suitable candidate for the salesperson job. Selection procedure. Screening of applications. Applications and resumes to shortlist qualified candidates. Preliminary interview. A short initial interview to judge basic communication skills and suitability. Employment test. Written test or skill test to assess knowledge, personality, aptitude, and selling skills. Next, final interview. Detailed interview by the sales manager to judge the candidate's confidence, product knowledge, and behavior. Next, reference and background check. Verification of previous job experience, character, and references. Selection and appointment. The best candidate is selected and given an appointment letter. Employee joins the organization. Next, distinguish between recruitment and selection. So, recruitment is the process of inviting and attracting candidates for a
job. And selection is the process of choosing the most suitable candidate from the applicants. Purpose: to create a large pool of applicants. To choose one best candidate from the pool. Next, nature. Positive process encourages more people to apply. Negative process eliminates unsuitable candidates. Next, stage. It is the first step in hiring. It is the next step after recruitment. Comparatively less costly, more expensive and time consuming. Next, outcome. Produces many applicants. Results in final appointment. Next, what is training? Define. Training is the process of improving the knowledge, skills and abilities of employees so they can perform their jobs effectively. तो ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉइज का नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज को इंप्रूव किया जाता है सो दे कैन परफॉर्म देयर जॉब्स इफेक्टिवली. इन सेल्स, ट्रेनिंग हेल्प्स सेल्स पर्सन learn sales techniques, product knowledge, communication, and customer handling. Training improves job skills. Training teaches salesperson how to sell, persuade, approach customers, and close sales. Training helps adapt to changes. Salespersons learn about new products, new markets, and new selling techniques. Training increases efficiency. Trained employees work faster, handle customers better, and make fewer mistakes. State the need or importance of training a salesperson. Training is essential for salesperson because it improves their skills, confidence, and effectiveness in selling products. Importance of training. It improves selling skills. Training teaches selling techniques, communication, negotiation, and customer handling. Helps salespersons increase sales. Next, it provides product knowledge. Salespersons learn details about the features, benefits, and uses of the products. Helps answers customer questions confidently. Next, boosts confidence and motivation. A trained salesperson feels more confident in dealing with customers. Leads to better performance and job satisfaction. Next, reduces mistakes and saves time. Proper training reduces error in selling, billing, and communication. Improves efficiency and customer satisfaction. Next, what are the methods of training of a salesperson? Training methods are the ways or techniques used to teach skills to salespersons. They are mainly divided into on the job training method, means training given at the workspace while doing the job. Next, of the job training methods, training given away from the actual workplace. तो पहले देखता है on the job training method. तो इसमें सबसे पहला मेथड जो आता है वो है कोचिंग. सेल्स पर्सन्स लर्न अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ ए सीनियर और सेल्स मैनेजर. Helps improve practical selling skills. Next, job rotation. Salespersons are shifted through different jobs or departments. Helps them understand the business and gain experience. Next, internship training. Trainees work with experienced salespersons to learn real market situations. Useful for freshers. Of the job training method, इसके अंदर पहला आता है क्लासरूम लेक्चर्स. फॉर्मल टीचिंग अबाउट सेल्स टेक्निक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोडक्ट नॉलेज. नेक्स्ट, रोल प्लेइंग. सेल्स पर्सन्स एक्ट एज कस्टमर्स एंड सेलर्स टू प्रैक्टिस रियल लाइफ सेल्स सिचुएशंस. नेक्स्ट, केस स्टडीज और ग्रुप डिस्कशंस. लर्निंग थ्रू बिजनेस प्रॉब्लम्स, डिस्कशंस एंड एग्जाम्पल्स. यूनिट 3, रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्स पर्सन. और आज की क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेगा वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो यहां से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है. सारे क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में जाके किल कर देना है. ठीक. और दूसरा बात, क्या नहीं करना है. तो सबसे पहला बात,
तुमको मोटिवेशन का, मूड का वेट नहीं करना है कि जब मोटिवेशन आएगा, मूड करेगा तब पढ़ाई करेगा। नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा बात, खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, बस तुमको खुद को इंप्रूव करना है और प्रिपरेशन में लगना है। और तीसरा बात, ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया, आज से चालू करेगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम आज से, अभी से चालू कर देता है ना, तो बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो ठीक है, फिर अच्छा क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रेम्यूनरेशन? डिफाइन। रेम्यूनरेशन refers to the payment or compensation given to a salesperson for the work he performs. It includes salary, commission, bonuses, incentives, allowances and other financial rewards. तो सेल्स पर्सन को जो भी पेमेंट या फिर कॉम्पेंसेशन मिलता है उनके काम के लिए, उनके वर्क के लिए, उसी को हम लोग रेम्यूनरेशन बोलता है। और रेम्यूनरेशन के अंदर सैलरी, कमीशन, बोनसेस, इंसेंटिव्स, अलावेंस, ये सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो रेम्यूनरेशन इज द रिवॉर्ड फॉर वर्क. इट इज गिवन टू सेल्स पर्सन्स फॉर देयर सेलिंग एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस. Remuneration motivates salespersons. A good remuneration system encourages them to work harder and sell more. It helps attract and retain talent. Fair payment helps the company hire a skilled salesperson and keep them satisfied. Next, what are the requirements of a sound remuneration plan? तो सेल्स पर्सन को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, पेमेंट मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है, वो कैसा होना चाहिए? मतलब एक अच्छा रेम्यूनरेशन प्लान में कौन कौन सा चीज होना चाहिए जिससे सेल्स पर्सन मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहे? तो ए साउंड रेम्यूनरेशन प्लान ensures that salespersons are fairly and effectively paid so that they remain motivated and productive. Simplicity and clarity. The remuneration plan should be easy to understand. Salesperson should clearly know how their pay is calculated. तो सबसे पहला बात, remuneration plan easy to understand होना चाहिए, मतलब आसानी से समझ में आना चाहिए और सेल्स पर्सन को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि उनका पे कैसे कैलकुलेट हो रहा है. नेक्स्ट, फेयरनेस एंड इक्विटी. Payment should be fair and reasonable for the work performed. Equal work should receive equal pay without discrimination. Next, motivation and incentives. The plan should encourage salespersons to work harder and increase sales. Must include incentives for better performance. It should be adjustable according to market condition, company policies and performance levels. Next, cost effective. The remuneration system should fit within the company's budget. Also must benefit both employer and employee. So a sound remuneration plan should be simple, fair, motivating, flexible and cost effective, ensuring both the company and the salesperson benefit. Next, state the factors affecting the remuneration of a salesperson. तो यहां बात हो रहा है फैक्टर्स का, मतलब कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है या फिर ध्यान देना होता है while preparing remuneration of a salesperson. The remuneration of a salesperson depends on several factors related to the job, the salesperson and the company policies. तो इससे पहला आता है nature of the job. Difficult or field based sales jobs require higher pay. Jobs involving high travel or risks also demand better compensation. तो अगर जॉब डिफिकल्ट या फिर फील्ड बेस्ड होता है वहां पे हायर पे रिक्वायर होता है, या फिर जॉब्स जिनमें हाई ट्रेवल या फिर रिस्क इन्वॉल्व होता है वो भी बेटर रेम्यूनरेशन डिमांड करता है. नेक्स्ट, लेवल ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस. हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड सेल पर्सन्स आर beginners or trainees receives lower remuneration. Next, companies financial position. Companies with strong
financial status can offer higher salaries and incentives, may provide limited remuneration. Next, sales volume and performance. Salespersons who generate high sales often earn more through incentives or commission. Performance directly affects earnings. Next, market and industry conditions. Competitive market require companies to offer attractive pay to retain talent, and industry standards also influence remuneration levels. So, a salesperson remuneration depends on job difficulty, skills, performance, company resources, and market conditions. Next, what are the methods remunerating a salesperson? So, the main methods of remunerating a salesperson are salary method, commission method, and combination method. Combination method मतलब salary plus commission. तो यहां बात हो रहा है मेथड्स के बारे में, मतलब कौन कौन सा तरीका है जिससे हम लोग सेल्स पर्सन को उनका पेमेंट, कंपेंसेशन, रेम्युनरेशन दे सकता है। तो इसमें सबसे पहला आता है सैलरी मेथड, दूसरा है कमीशन मेथड और तीसरा है कॉम्बिनेशन मेथड मतलब सैलरी प्लस कमीशन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सैलरी मेथड ऑफ रेम्युनरेशन with its merits and demerits. So, under the salary method, a salesperson receives a fixed amount of money at regular intervals, means monthly. The payment does not depend on sales volume. तो salary method के अंदर salesperson fixed amount of money receive करता है at regular intervals, मतलब monthly. Next, merits of salary method. Stability and security. Salespersons receives a fixed income, giving financial security and peace of mind. Next, simple to understand, easy to calculate and administer. No complicated commissions or calculations. Next, encourages long-term work, suitable for jobs requiring customer service, not immediate sales. Next, demerits of salary method. Less motivation. Since income is fixed, salesperson may lack motivation to increase sales. Next, may attract low performers. People who prefer job security over performance may join. Next, high cost for company. Company must pay salary even when sales are low. So, the salary method provides security and simplicity, but it may not motivate salespersons to achieve higher sales performance. Next, explain the commission method of remuneration with its merits and demerits. Under the commission method, a salesperson is paid according to the sales made. Income depends directly on the quantity or value of प्रोडक्ट्स सोल्ड। तो कमीशन मेथड के अंदर सेल्स पर्सन जितना सेल्स करता है उसके हिसाब से उसको पे किया जाता है, मतलब उसका इनकम डायरेक्टली डिपेंड होता है जितना क्वांटिटी वो सोल्ड करता है, मतलब वो जितना ज्यादा बेचेगा उसका इनकम उतना ही ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ कमीशन मेथड। हाई मोटिवेशन, मोर सेल्स इज इक्वल टू मोर इनकम, encourages salesperson to work harder and increase performance. Next, no fixed cost to company. Company pays only when sales are made. Reduces financial burden during low sales periods. Next, encourages efficiency. Salespersons approach more customers, improve selling skills, and focus on results. Next, demerits of commission method. Income uncertainty. Income is not stable, varies with sales results. Salespersons may feel insecure. Next, poor customer service. Salespersons may focus only on closing sales quickly. Poor commission after sales service may be ignored. Next, unhealthy competition. Salespersons may compete aggressively or use unfair methods to increase their sales. So,
The commission method provides strong motivation and reduces companies' cost, but leads to income instability and possible customer neglect. Next, explain the combination method, means salary plus commission, with its merits and demerits. The combination method pays a salesperson a fixed salary plus a commission based on sales. It is a balanced approach, combining security and motivation. तो कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर सेल्स पर्सन को एक फिक्स सैलरी प्लस कमीशन भी दिया जाता है बेस्ड ऑन सेल्स. नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन मेथड, balance of security and incentive. Fixed salary provides income security. Commission gives motivation to increase sales, encourages better customer service. Salespersons are not fully dependent on commission. They can spend time on after sales service and building customer relations. Next, attracts and retains talent. This method is fair and attractive, suitable for both new and experienced salespersons. Next, demerits of combination method. Higher cost for company. Company must pay both salary and commission, increasing expenses. Next, complex to calculate. Requires proper records and monitoring to calculate exact commission. Administrative work increases. Next, uneven motivation. If salary is high, salesperson may rely more on salary and work less. If commission is low, motivation drops. So, the combination method offers a balanced and flexible payment system, ensuring both stability and performance, making it suitable for most sales jobs. Unit 4, Sales Territories and Sales Quotas. और आज के क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चंस करेगा ये सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो करना क्या है, यहां से एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और एग्जाम में किल कर देना है. आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात. और दूसरा बात, क्या नहीं करना है, तो तुमको मोटिवेशन का, मूड का वेट नहीं करना है कि जब मोटिवेशन आएगा, मूड करेगा तब पढ़ाई करेगा. नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है. और दूसरा, खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, बस तुमको खुद को इंप्रूव करना है और प्रिपरेशन में लगना है. और तीसरा बात, ये नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया, आज से चालू करेगा तो क्या हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तुम आज से, अभी से भी चालू करता है ना तो बढ़िया रिजल्ट हो सकता है. समझ रहा है? तो बस अपने मिशन में लगना है और एग्जाम में किल कर देना है. ठीक, तो चलो ठीक है, फिर अच्छा क्लास चालू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज ए सेल्स टेरिटरी? डिफाइंड. तो ए सेल्स टेरिटरी इज ए जियोग्राफिकल एरिया और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स असाइंड to a salesperson or sales team. It helps in distributing work properly and avoiding overlap among salespersons. तो यहां बात हो रहा है टेरिटरी, मतलब सेल्स टेरिटरी. अब ये क्या है? ये कोई जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हो सकता है जो कि असाइन किया जाता है. किनको? सेल्स पर्सन को या फिर सेल्स टीम को. और इससे होगा क्या? ये वर्क को, काम को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है और ओवरलैप से बचाता है. किनको? सेल्स पर्सन्स को. तो एरिया असाइंड फॉर सेलिंग, मतलब द कंपनी डिवाइड्स द मार्केट इनटू स्मॉलर टेरिटरीज और स्मॉलर एरियाज एंड असाइंस ईच टू ए सेल्स पर्सन. हेल्प्स इंप्रूव कवरेज, एंश्योर्स एवरी एरिया और कस्टमर ग्रुप is properly served without neglect, avoids conflicts among salespersons. Each salesperson knows their exact area, reducing confusion and competition within the team. Next, what are the objectives of sales territory allocation? So, sales territory allocation means dividing the market into specific areas and assigning each area to a sales person. It helps in achieving organized and efficient
सेलिंग। तो सेल्स टेरिटरी एलोकेशन पूरे मार्केट को डिवाइड करता है इनटू स्पेसिफिक एरियाज, और वो छोटा छोटा एरियाज सेल्स पर्सन को असाइन किया जाता है। और इससे होगा क्या, ये सेलिंग को ऑर्गेनाइज्ड और इफिशिएंट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। बेटर मार्केट कवरेज ensures every area and customer group is properly visited and served. It avoids neglect of any reason, avoid overlapping of efforts, prevents two salespersons from approaching the same customers, reduces confusion and internal conflict. Next, fair distribution of workload. Each salesperson gets a balanced amount of work, leads to improved efficiency and performance. Next, better sales control and evaluation helps measure each salesperson's performance clearly, makes supervision and monitoring easier. So, the main objectives of sales territory allocation are coverage, clarity, fairness, and control to improve overall sales efficiency. Next, explain the importance of sales territories. Sales territories help divide the market into manageable areas, making selling more organized and systematic. तो सेल्स टेरिटरीज मार्केट को मैनेजेबल एरियाज या फिर छोटा छोटा एरियाज में डिवाइड करने में मदद करता है, जिससे सेलिंग ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक रहता है। Importance: ensures proper market coverage. Every area and customer group receives attention. No region is left unserved. Next, reduces wastage of efforts. Avoids two salespersons visiting the same customers. Saves time, money, and effort. Next, helps in performance evaluation. Sales manager can easily measure each salesperson's output, helps identify strong and weak territories. Next, improves customer service. Salespersons can focus better on their assigned area, leads to more frequent visits and stronger customer relations. Next, state the factors affecting the size of a sales territory. The size of a sales territory depends on different market, product, and salesperson related factors. A proper size ensures balanced workload and efficient selling. तो सेल्स टेरिटरी का साइज बनाते समय, रखते समय हम लोगों को कौन से फैक्टर्स का ध्यान देना होता है या फिर कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, किस चीज का? साइज ऑफ ए सेल्स टेरिटरी। मतलब यहां बात हो रहा है साइज का, कि इन सेल्स टेरिटरी का जो साइज है वो किस हिसाब से होना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। टेक्निकल और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नीड मोर एक्सप्लेनेशन। मतलब स्मॉल टेरिटरीज, यहां पे स्मॉलर टेरिटरीज होना चाहिए। नेक्स्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब FMCG गुड्स कैन बी सोल्ड क्विकली। तो यहां पे लार्जर टेरिटरीज हो सकता है। नेक्स्ट, मार्केट पोटेंशियल और मार्केट डेंसिटी। If A has many customers, it must be smaller. Or if the customers are spread out, the territory should be larger. Next, ability and experience of the salesperson. Skilled, experienced salesperson can handle larger territories. New or less experienced salesperson need smaller territories. Next, competition level. Highly competitive areas need more frequent visits, means smaller territories. Low competition areas can have larger territories. So, the size of a sales territory depends on product type, customer availability, salesperson ability, and competition, ensuring balanced workload and better performance. Next, what is a sales quota? Define. A sales quota is a target or goal
set for a salesperson or sales team for a specific period, month, quarter, year. It indicates the minimum amount of sales they are expected to achieve. तो सेल्स पर्सन को या फिर सेल्स टीम को कुछ टारगेट या फिर गोल दिया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि मंथ, क्वार्टर, ईयर, और इसी टारगेट को, गोल को सेल्स कोटा बोलता है. ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल्स इंडिकेट करता है दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. It acts as a benchmark to measure how well a salesperson performs. Helps sales planning. Sales quotas guide planning for production, distribution, and marketing. Motivates salespersons. Salespeople work harder to achieve or exceed their assigned quota. Next, what are the factors affecting the setting of sales quota? Setting a sales quota means fixing the sales target for each salesperson. Several factors influence how high or low this target should be. तो जब भी हम लोग सेल्स कोटा सेट करता है सेल्स पर्सन के लिए, सेल्स टीम के लिए, तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सेटिंग ऑफ सेल्स कोटा को अफेक्ट करता है. मतलब कौन कौन से फैक्टर्स को हम लोग को ध्यान देना होता है while setting sales quota. तो market potential. Areas with higher customer demand requires higher quotas. Weak or new markets need lower quotas. Next, salesperson's ability and experience. Skilled and experienced salesperson can handle higher quotas. New or less experienced salespersons receive lower quotas. Next, competition in the market. In highly competitive markets, quotas must be realistic and lower. And in less competitive markets, quotas can be higher. Product characteristics. Complex, costly products take longer to sell, means lower quotas. Fast moving products sell faster, means lower quotas. So, sales quotas are set based on market demand, salesperson capability, competition, and market type to ensure fairness and achievable targets. Next, what are the methods of sales quota? Methods of sales quota refers to the ways of fixing sales targets for salespersons. तो कौन कौन सा मेथड से तरीका है जिससे हम लोग सेल्स टारगेट फिक्स कर सकता है, किसके लिए? फॉर सेल्स पर्सन. तो पहला है सेल्स वॉल्यूम कोटा. दिस कोटा इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल्स. तो सेल्स वॉल्यूम कोटा के अंदर हम लोग क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल्स के अनुसार सेल्स टारगेट फिक्स करता है. एग्जाम्पल लाइक 5 लाख पर मंथ, मतलब हर एक महीना तुम 5 लाख का सेल्स टारगेट फिक्स कर दिया. नेक्स्ट, एक्टिविटी और एफर्ट कोटा बेस्ड ऑन सेल्स पर्सन्स एक्टिविटीज सच एज नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स, नंबर ऑफ कॉल्स मेड, नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपन्ड. यूजफुल व्हेन एक्चुअल सेल्स डिपेंड ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. नेक्स्ट, प्रॉफिट बेस्ड कोटा. This quota is fixed according to the profit earned, not total sales. Encourages selling profitable products. Next, expense quota. Based on controlling expenses like travel, promotional costs, etc. Helps manage cost efficiency. So, sales quota can be set based on sales volume, salesperson activities, profit generated, or expense control depending on company objectives. Next, what are the requirements of a successful sales quota? A sales quota is successful only when it motivates salesperson and helps achieve company sales goals. So, clear and realistic. Quotas should be easy to understand
and achievable. Unrealistic quotas reduce motivation. Next, based on market analysis. Quotas must be fixed after studying market potential, competition, and demand. Ensures fairness among different territories. Next, flexible. Should allow adjustments for seasonal changes, economic conditions, or new products. This makes the system practical. Next, fair and motivating. Quotas must be fair for all salespersons. Good quotas encourage them to work harder and perform better. So, a successful sales quota must be clear, realistic, flexible, fair, and motivating, helping both the salesperson and the company succeed. Next, what is a sales report? Define. A sales report is a written record prepared by a salesperson about the sales activities performed during a specific period. It includes details such as sales made, customers visited, orders received, problems faced, and market conditions. Helps track sales performance. Shows the progress made by the salesperson during a week, month, or quarter. Provides valuable market information. Contain details about customers' need, competitor activities, and market trends. Tool for monitoring work. Sales managers use these reports to evaluate and guide the salesperson's performance. Next, state the objectives and utility of a sales report. A sales report helps the sales manager understand the salesperson's works, performance, and market situation. To measure sales performance, helps check whether the salesperson has achieved the sales target. Next, to provide market information. Reports include details about customer preference, competitor activities, and market trends. To evaluate sales efforts. Shows the number of customer visits, calls made, orders received, and problems faced. Next, to plan future sales strategies. Helps the company improve products, pricing, distribution, and promotional plans. Next, utility of a sales report means benefits. मतलब इस सेल्स रिपोर्ट्स का बेनिफिट और यूटिलिटी क्या है? तो helps in decision making, provides accurate data for planning, production, distribution, and marketing, improves supervision and control. Sales managers can identify weak areas and guide salespersons to improve. So, a sales report is useful for performance measurement, planning, decision making, and effective supervision, making it an essential tool for sales management. Group B, Unit 1, Basics of Advertisement Preparation. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. What are buying motives? Define and classify. Buying motives are the reasons or forces that influence a customer to purchase a product. They explain why a customer decides to buy a particular product or service. तो जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस खरीदता है तो उसके पीछे या तो कोई रीजन होता है या फिर कोई फोर्सेस होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसको, कस्टमर्स को, कि वो प्रोडक्ट को, सर्विसेज को खरीदे. उसी को बोलता है हम लोग बाइंग मोटिव्स. क्या समझा? तो ये जो बाइंग मोटिव्स है यही हम लोगों को एक्सप्लेन करता है कि कोई कस्टमर क्यों डिसाइड करता है कोई प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग मोटिव्स. तो बाइंग मोटिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज. फर्स्ट, रैशनल बाइंग मोटिव्स, मतलब बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजन एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग. नेक्स्ट है इमोशनल बाइंग मोटिव्स, मतलब बेस्ड ऑन फीलिंग्स, इमोशंस एंड पर्सनल डिजायर्स.
तो थोड़ा डिटेल में देखता है कि ये रैशनल बाइंग मोटिव क्या होता है। बेस्ड होता है लॉजिक, रीजन या फिर प्रैक्टिकल थिंकिंग के अनुसार, तो उसी को हम लोग रैशनल बाइंग मोटिव बोलता है। क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, बाइंग बिकॉज द प्रोडक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड रिलायबल। नेक्स्ट, प्राइस एंड इकोनॉमी, कस्टमर्स लुक फॉर रीजनेबल प्राइसेस and value for money. Next, utility and performance, buying because the product meets specific needs or performs well. Next, emotional buying motives, based on feelings, emotions and personal desires. तो जब भी अपना buying decisions फीलिंग्स, इमोशन या फिर पर्सनल डिजायर के अनुसार होता है, तो उसी को हम लोग इमोशनल बाइंग मोटिव बोलता है। प्राइड एंड प्रेस्टीज, बायर्स वांट प्रोडक्ट्स दैट इंक्रीज देयर स्टेटस और सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट, फियर एंड सिक्योरिटी, बाइंग फॉर सेफ्टी, इंश्योरेंस, सीसीटीवी, मेडिसिन्स। नेक्स्ट, लव एंड अफेक्शन, बाइंग गिफ्ट्स, toys or things for family and friends. Next, what is the AIDA model of advertising? Explain its stages. The AIDA model is a classic advertising model that shows the 4 stages of a customer goes through before buying a product. AIDA stands for attention, interest, desire and action. Stages of AIDA model. First, attention. The advertisement must catch the viewer's attention. Use of attractive visuals, headlines, colors, celebrities, etc. Next, interest. After grabbing attention, the ad must create interest in the product, provide information, features or benefits to engage the customer. Next, desire. The advertisement should create a strong desire or preference for the product. So, how the product solves problem or improves life. Next, action. Finally, the ad must encourage the customers to take action, like buy now, call, visit store, order online. Includes CTA. CTA मतलब call to action, जैसे कि buy now, visit today, limited offer. The AIDA model helps advertisers create effective ads by guiding the customer from attention to final purchase action. Next, what is an advertising copy? Define. An advertising copy is the written or spoken message used in an advertisement to convey information about a product or service. It includes headlines, subheading, text, slogan, brand name, visuals and call to action. तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर रिटेन मैसेज या फिर स्पोकन मैसेज यूज किया जाता है कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए, किस चीज के लिए, फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। और वो रिटेन मैसेज या फिर स्पोकन मैसेज हेडलाइन, सब हेडलाइन, टेक्स्ट, स्लोगन, ब्रांड नेम, विजुअल या फिर कॉल टू एक्शन हो सकता है। ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। कोर मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, इट टेल्स द ऑडियंस what the product is, its features and why they should buy it. Next, influences consumer decision. A good copy attracts attention, creates interest and motivates purchase. Used in all types of media, print ads, TV ads, radio ads, social media posts, banners, posters, etc. Next, what are the essential elements of a good advertising copy? A good advertising copy must contain certain essential elements to attract customers, create interest and motivate purchases. So, headline, the most important part that grabs attention instantly. It should be catchy, short and attractive. Next, subheadline,
supports the headline and provide additional information, helps build interest. Next, body copy or text. The main message explaining features, benefits, and details of the product should be simple and clear. Next, slogan or tagline. Short and memorable phrase representing the brand. Example, just do it, like Nike. Next, illustration or visuals. Pictures, graphics, or diagrams that make the ad attractive. Helps communicate quickly. Next, call to action. A statement encouraging the customer to buy now, visit store, order, or contact. Example like buy now. So, a good advertising copy includes a strong headline, clear message, visuals, and CTA, making the ad effective and appealing. Next, what are the features of an effective advertising copy? An effective advertising copy is one that attracts attention, creates interest, and persuades customer to buy the product. Next, features. Clarity and simplicity. The message should be easy to understand, avoids confusing words or long sentences. Next, attention grabbing. The headline and visuals must attract the viewers immediately. Next, persuasive and convincing. Should highlight the benefits and advantages of the product. Encourages customers to prefer the brand. Next, truthful and honest. Claims made in the ad must be realistic and accurate. Builds customer trust. Next, customer oriented. Focuses on solving customers' problem and fulfilling their needs. Uses the language and tone suitable for the target audience. What are the types of advertising copy? Advertising copy can be prepared in different styles depending on the message, audience, and product type. Next, types of advertising copy. Descriptive copy provides detailed information about the product, suitable for technical or complex products. Next, narrative copy presents the message in the form of a story or situation, engages readers emotionally. Next, testimonial copy uses statements or endorsement from satisfied customers or celebrities, increases trust and credibility. Next, scientific or technical copy uses facts, statistics, and technical details to convince the audience, suitable for medicines, electronics, machinery, etc. Next, dialogue copy presented in the form of a conversation between two or more people, makes the message natural and relatable. Next, humorous copy uses funny lines, cartoons, or jokes to attract attention, effective for youth-oriented products. Next, what is the layout of an advertising copy? Define. The layout of an advertising copy refers to the arrangement or placement of different elements like headline, text, image, logo, slogan in an advertisement. It shows how the advertisement will look when printed or displayed. Visual plan of the ad. The layout acts as a blueprint, showing the size, position, and lifestyle of each element. Next, makes the ad attractive. A good layout ensures proper balance between text and visuals, making the ad eye-catching. Next, ensures easy understanding. Proper arrangement makes it easier for the audience to read and understand the message. Next, what are the principles of a good layout? A good layout follows certain principles to make the advertisement attractive, clear, and effective. Principles of a good layout. Balance.
Visual and text element must be evenly arranged. Avoids overcrowding on one side. Next, unity. All elements, headlines, image, text, logo must look connected and consistent. Creates harmony in design. Next, simplicity. Should be clean and uncluttered. Simple layouts are easier to understand and more appealing. Next, emphasis. Key elements like the headline, product image, or price should stand out. Helps draw viewer attention. Next, contrast. Use of different colors, fonts, or sizes to highlight important parts. Aids visual interest and clarity. Next, what are the stages in preparing a layout? Preparing a layout involves several steps to design an effective advertisement. Stages in preparing a layout. Studying the product and market. Understand the product features, target audience, and competitors. Helps decide the style and message. Next, preparing the rough sketch. A simple pencil sketch showing the basic arrangement of elements. Helps visualizing the advertisement. Next, selecting the design elements. Choosing headline, slogan, image, colors, fonts, and body text ensures the ad fits the objective. Next, creating the final layout. A clean, polished, and complete layout is prepared. It shows exact positions, sizes, and colors of all elements. Obtaining approval. The final layout is shown to the client or manager for approval. Changes are made if required before printing. Next, what is an advertising theme? State its type. An advertising theme is the central idea or message around which an advertisement is created. It gives a consistent direction to the advertising campaign and helps the audience remember the brand. Next, types of advertising theme. Product-oriented theme focuses on the feature, quality, and benefits of the product. Example, more mileage, superior taste. Next, emotional-oriented theme appeals to feelings and emotions like love, pride, fear, happiness. Example, it's showing family bonding. Next, brand image theme focuses on building a strong brand identity. Example, Apple's think different. Next, price or offer-based theme highlights discount, sales, or special offers. 50% off, buy one, get one free. So, an advertising theme is the main message that guides the entire advertisement, and it can be product-based, emotion-based, brand-based, or offer-based. Unit 2, Advertising Agency and Ethics. तो सबसे पहला क्वेश्चन, what is an advertising agency? Define. An advertising agency is a professional organization that creates, plans, and manages advertisement for its clients. It provides services like market research, creative design, media planning, and advertising production. तो यहां बात हो रहा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में, और ये क्या है? ये एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करता है, प्लान करता है और मैनेज करता है। किसके लिए? अपने क्लाइंट्स के लिए। और इसके अंदर कौन कौन सा सर्विसेज आ जाता है? जैसे कि मार्केट रिसर्च, क्रिएटिव डिजाइन, मीडिया प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन। ये सारा सर्विसेज एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रोवाइड करवाता है। किसको? अपने क्लाइंट्स को। Expert in advertising work. Agencies have trained professionals such as copywriters, designers, media planners, and marketing experts. Works on behalf of clients. Businesses hire an agency to prepare effective advertisement and run ad campaigns.
saves time and cost. Agencies handle all advertising activities, reducing workload for companies. Next, what are the functions of an advertising agency? An advertising agency performs several functions to help clients, like design, plan, and execute effective advertisements. Functions: market research, studies customer needs, competitor aids, and market trends. Helps in creative, suitable advertisements. तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फंक्शन के बारे में, मतलब ये एजेंसी करता क्या है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस, जैसे कि डिजाइन, प्लान एंड एग्जीक्यूट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स। और मार्केट रिसर्च के अंदर ये एजेंसीज कस्टमर के नीड्स, कॉम्पिटिटर एड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करता है और सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, क्रिएटिव वर्क prepares the advertising copy, slogans, visuals, layout, and design. Responsible for creative content. Next, media planning and selection. Decides where the ad should appear, like TV, newspaper, social media, radio, etc. Plans the media budget and schedule. Next, advertising production. Produces the final advertisement, like printing, filming, recording, works with photographers, videographers, designers, etc. Next, placement and execution. Ensures ads are placed in selected media on time. Ensures ads are placed in selected media on time. Coordinates with media houses and publishers. Next, evaluation of advertisement. Measures the performance of the ad campaign. Suggests improvements for future ads. So, an advertising agency handles everything from research to creation, media planning, execution, and evaluation, providing complete advertising support to clients. Next, what are the departments of an advertising agency? An advertising agency is divided into several departments, each performing a specific function to create successful advertisements. Main departments of an advertising agency: account or client department acts as a link between the client and the agency, understand client needs and communicates them to the internal team. Next, creative department creates the advertising copy, slogan, visuals, design and layout. Includes copywriters, graphic designers and art directors. Next, media planning and buying department selects the right media, TV, radio, print, digital for advertising. Buys media space and manages the ad schedule. Next, market research department conducts surveys and research to understand consumer behaviors, products and competitors. Helps create suitable strategies. Next, production department produces the final advertisement, printing, video shooting, editing, recording, works with photographers, printers and production houses. Next, finance and billing department manages budgeting, cost control and billing. Handles payment to media houses and other vendors. Next, what factors should be considered while selecting an media agency? Selecting the right advertising agency is important for creating effective and successful advertisements. तो यहां बात हो रहा है फैक्टर्स के बारे में, मतलब जब भी हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेलेक्ट करता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान देना चाहिए या फिर कंसीडर करना चाहिए। तो एक राइट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसलिए? फॉर क्रिएटिंग effective and successful advertisements. First, experience and reputation. Agency should have a good track record and experience in handling similar clients.
reputation in the industry matters. Next, creative ability. The agency must have a strong creative team that can produce appealing and effective ads. Next, range of services. Should offer complete services like research, design, media planning, digital marketing, etc. Saves time and cost for the client. Next, cost and budget. The agency's charges should fit within the client's advertising budget. Must provide value for money. Next, understanding of client's business. Agency must understand the client's products, customers, and market, which leads to better advertising strategies. So, an advertising agency should be selected based on experience, creativity, services, cost, and its understanding of the clients to ensure effective advertising. Next, what is meant by ethics in advertising? Ethics in advertising refers to following moral principles and honesty while creating and presenting advertisements. It ensures ads do not mislead, harm और exploit consumers. तो यहां बात हो रहा है एथिक्स के बारे में, मतलब मोरल प्रिंसिपल्स और ऑनेस्टी जो कि होना चाहिए while क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग एडवर्टाइजमेंट, और ये एंश्योर करना चाहिए कि कस्टमर्स को ये मिसलीड, हार्म या फिर एक्सप्लॉइट ना करे. ट्रूथफुल कम्युनिकेशन. एड्स मस्ट प्रेजेंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट विदाउट फॉल्स क्लेम्स. नो मिसलीडिंग और डिसेप्टिव कंटेंट. Ads should not exaggerate benefits or hide important facts. Next, social responsibility. Ads must not promote harmful behavior, discrimination, or offensive content. Next, what are the unethical practices in advertising? Unethical practices are wrong, misleading, or harmful methods used in advertisements that cheat or manipulate consumers, misleading or false claims, exaggerating product benefits or giving false information. Example, fake cures, unrealistic results. Next, concealing important facts, hiding side effects, extra charges or conditions. Example, free trial with hidden fees. Next, unrealistic or deceptive comparisons, comparing products unfairly to show superiority. Example, claiming to be number one without proof. Next, offensive or harmful content. Ads showing violence, vulgarity, or discrimination. Next, manipulating children. Targeting children with misleading cartoon ads or emotional tricks. So, unethical advertising misleads consumers through false, hidden, offensive, or manipulative content, which must be avoided. Next, why is ethical advertising important? Ethical advertising ensures that ads are honest, fair, and responsible, protecting both consumers and society. Importance: builds consumer trust. Honest ads make customers trust the brand. Trust leads to long-term customer relationships. Next, protects consumers from harm. Prevents false claims, hidden facts, or harmful messages. Ensure consumer safety and awareness. Next, improves brand reputation. Ethical advertising creates a positive image of the company, helps the brand stand out in the market. Next, ensures legal compliance, avoids legal penalties for false or misleading advertisements. Companies follow rules set by AHSEC and CCPA. Next, promotes healthy competition, encourages fair and honest marketing practices among companies. So, ethical advertising is important because it builds trust,
protects consumers, enhances brand reputation, ensures legal compliance, and supports a fair marketplace. Next, what is ASCI? Explain its role in regulating advertisement. ASCI stands for Advertising Standards Council of India. It is a self-regulatory body that checks whether advertisement in India follow ethical standards. Its role regulates false and misleading ads. ASCI identifies ads that make false claims or cheat consumers, ensures ads are honest and accurate. Next, receives and resolves complaints. Consumers, companies, or anyone can file a complaint. ASCI reviews the ad and takes action if necessary. Next, protects public interest. Make sure ads do not violate public morality or promote harmful behavior. Prevents offensive or unsafe content. Next, ensures fair competition. Stops companies from making unfair comparisons or attacking competitors with misleading claims. Next, issues guidelines for advertisers. Provides rules for ads relating to children, health products, financial services, etc. Helps the industry maintain ethical standards. So, ASCI plays an important role in maintaining honest, safe, and ethical advertising in India by monitoring ads, handling complaints, and issuing guidelines. Next, what is CCPA? Explain its role in consumer protection against false advertisements. CCPA stands for Central Consumer Protection Authority. It is a government body formed under the Consumer Protection Act 2019 to protect consumers from unfair trade practices and misleading advertisements. Role of CCPA: takes action against misleading ads. CCPA can investigate and punish companies that publish false or deceptive advertisements, ensures consumers receive correct and truthful information about products and services. Next, imposes penalties and fines. Can impose fines up to 10 lakhs for first-time violations and higher for repeated violations. Can also ban an advertisement. Next, holds celebrities and influencers accountable. If a celebrity endorses a false ad, CCPA can take action against them too. Ensures responsible endorsement. Next, orders withdrawal of harmful ads. Can order companies to remove or modify misleading or dangerous advertisements. So, CCPA plays a vital role in protecting consumers by taking strict action against false, misleading, and harmful advertisements, ensuring transparency and fairness. Next, explain ethics in advertising. Why is it important? Ethics in advertising means following moral rules, honesty, and fairness while creating and publishing advertisements. It ensures ads do not mislead, harm, or offend customers. Next, principles of ethical advertising. Truthfulness. Ads should give accurate information and avoid false claims. Next, transparency. Must not hide important facts such as side effects, conditions, or hidden charges. Next, social responsibility. Ads should not provide violence, discrimination, or harmful behavior. Next, respect for consumers. Should avoid manipulating children, elderly people, or vulnerable groups. Next, importance of ethical advertising. Builds consumer trust. Honest ads increase customer confidence and loyalty. Next, protects consumers.
prevents harm from fake, misleading, or exaggerated claims. Next, improves brand reputation. Ethical companies earn a positive image and long-term success. Next, ensures legal compliance. Helps companies follow rules set by ASCI and CCPA, avoiding penalties. So, ethical advertising focuses on honesty, responsibility, and fairness, ensuring that advertisements protect consumers and maintain trust in the market. Unit 3, appeal in advertising. तो सबसे पहले देखता है what is an advertising appeal? Define. An advertising appeal is the technique or message used in an advertising to attract the attention of customers. It aims to create interest, desire, and motivation in the minds of consumers to buy a product. तो advertising appeal कोई टेक्निक या फिर कोई मैसेज हो सकता है जो कि एडवर्टाइजमेंट में यूज किया जाता है और किस लिए? कस्टमर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। और ये एडवर्टाइजिंग अपील करता क्या है? ये कंज्यूमर के माइंड में इंटरेस्ट, डिजायर और मोटिवेशन क्रिएट करता है जिससे कंज्यूमर, कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदे। कनेक्ट्स इमोशनली एंड रैशनली। अपील्स इन्फ्लुएंस customers through feelings like love, pride, fear, or logic like quality, price, usefulness. Main idea of an advertisement. It decides how the message is presented. Emotional, humorous, fear-based, informative, etc. Next, encourages buying behavior. A strong appeal convinces customers to prefer the brand and take action. Next, what are the objectives of advertising appeal? Advertising appeal is used to catch the customer's attention and persuade them to buy the product. Objectives of advertising appeal: attract attention. The main objective is to grab the attention of customers in a crowded market, create interest and desire. Appeals help customers feel interested in knowing more about the product. It creates a desire to purchase. Next, persuade customers to buy. Appeals highlight the benefits, emotions, or value, motivating customers to choose the product. Next, differentiate the product. Helps the product stand out from competitors. Example, emotional appeal versus rational appeal. Next, strengthen brand image. Effective appeals build brand loyalty, making customers remember the brand. So, the objective of advertising appeal are to attract interest, persuade, differentiate, and strengthen the brand in the customer's mind. Next, what are the essentials of a good advertising appeal? A good advertising appeal must be strong enough to attract attention, create interest, and influence buying decisions. Essentials or features of a good advertising appeal. First, simplicity. The appeal should be clear, short, and easy to understand. Avoids confusion for the audience. Next, relevance to the product. The appeal must match the product features, target audience, and their needs. Next, emotional and rational impact. The appeal should touch the customer's feeling like love, fear, pride, or logic like value, price, quality. Next, truthfulness and honesty. The message must be realistic and accurate. Builds trust among customers. Next, ability to create desire and action. A good appealing encourages customer to want the product and take action like buy, try, or inquiry. So, a good advertising appeal
is simple, relevant, honest, emotionally or rationally strong, and encourages consumer action. Next, what are the types of advertising appeal? Advertising appeal are the different ways advertisers attract customers through emotions, logic, and creativity. Types of advertising appeal. First, emotional appeals. Love and affection appeal. Used for gifts, family-oriented products, baby products. Fear appeal. Used for insurance, health products, safety products. Example, road safety aids. Next, pride or prestige appeal. Used for luxury items, car, jewelry, branded clothes. Makes customer feel important. Next, humor appeal. Uses jokes, funny situations or humorous characters to attract attention. Very effective for youth products. तो next appeal क्या है? Rational appeals like quality or performance appeal. Focuses on product quality, durability, reliability. Example, electronics, appliances. Next, economy or price appeal. Highlights discounts, savings, low price, money value. Example, buy one, get one free or festive seasons. So, advertising appeal includes emotional like love, fear, humor, pride, and rational like quality, price, approaches to attract and influence consumers. Next, explain emotional appeal with example. Emotional appeal tries to influence customers by touching their feelings, emotions, and sentiments rather than logic. तो इमोशनल अपील के अंदर कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है और कैसे? बाय टचिंग देयर फीलिंग्स, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स. Connects to human feelings, creates emotions like love, joy, pride, fear, affection, sadness, etc. Helps customers relate to the advertisement personally. Next, builds stronger impact. Emotional aids stay longer in the customer's mind. Helps increase brand loyalty and recall. Next, suitable for many products. Used for lifestyle, family, beauty, food, and social message aids. Examples of emotional appeal: love or affection. Aids showing parents caring for children. Example, Johnson's baby. Gifts items for festivals and birthdays. Next, fear appeal. Insurance aids showing protection for family. Road safety messages. Wear helmet, save life. Next, pride or status appeal. Luxury car aids like Audi, BMW. Branded fashion aids showing confidence and status. Next, happiness or joy aids showing celebration and family moments. Coca-Cola, Cadbury. So, emotional appeal uses feelings and sentiments to help customers connect deeply with the brand, making advertisements more effective. Next, explain rational appeal with examples. Rational appeal is an advertising approach that focuses on logic, facts, and practical benefits, convincing customers through reasoning. तो rational appeal वो advertising approach है जिसमें logic, facts और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स पे फोकस किया जाता है, जहां पे कस्टमर्स को कन्विंस किया जाता है थ्रू रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फीचर्स. हाइलाइट्स यूजफुल फीचर्स लाइक क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, प्राइस, एक्सेट्रा. लॉजिकल डिसीजन मेकिंग हेल्प कस्टमर्स मेक स्मार्ट, informed decisions instead of emotional ones. Suitable for technical or expensive products. Used for electronics, appliances, banking services, automobiles, etc. Examples of rational appeal: price or economy appeal, like save 30% on electricity bill, buy one, get one free. Next,
quality and performance appeal. Smartphone aids highlighting camera quality, battery life, ROM, RAM. Cars promoting mileage and safety features. Health and safety appeal. Food products showing nutritional values. Water purifiers showing filtration technology. So, rational appeal persuades customers using facts, features, and economic benefits, helping them make practical buying decisions. What are the relationship between buying motives and advertising appeal? So, buying motives are the reasons why customers buy a product, while advertising appeal are the methods used in ads to influence those motives. Both are closely connected. तो बाइंग मोटिव में हम लोग बात करता है रीजंस के बारे में कि क्यों कस्टमर्स कोई प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग अपील के अंदर हम लोग बात करता है मेथड्स के बारे में जो कि एड्स के अंदर यूज किया जाता है, किस लिए उन मोटिव्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो कस्टमर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदे. सो बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड. Appeals are based on buying motives. Advertisers study consumer motives like comfort, prestige, safety, and create appeals that matches those motives. If customers want safety, use fear appeal. Next, appeals convert motives into action. Buying motives create desire, and appeals turn that desire into actual purchase decisions. Example, pride motive. Luxury car aids use status appeal. Next, strong appeal strengthen customer motivation. Effective appeals make motives stronger and more convincing. Example, emotional aids make love or affection motives stronger. Motives decide the type of appeal used. Rational motive, price, quality, and performance appeal. Emotional motive, love, humor, prestige appeal. So, buying motives show why customers buy, and advertising appeal show how advertisers influence them. Thus, appeals are designed to match and activate the buying motives of consumers. Next, what is a tagline? Give examples. A tagline is a short, catchy phrase used by a brand to express its identity, promise, or message. It appears with the brand name in most advertisements and help customers remember the brand. तो tagline एक शॉर्ट या फिर कैची फ्रेज होता है जो कि ब्रांड्स यूज करता है अपना आइडेंटिटी, प्रॉमिस और मैसेज एक्सप्रेस करने के लिए. क्रिएट्स ब्रांड रिकॉल, हेल्प्स पीपल इंस्टेंटली कनेक्ट द फेस विद द ब्रांड, रिप्रेजेंट्स ब्रांड पर्सनैलिटी, shows the brand's purpose, tone or uniqueness. Examples of popular taglines: Nike, just do it. Amul, the taste of India. So, a tagline is a memorable phrase that strengthens brand identity and helps customers remember the product easily. Next, what is a punchline? How is it different from a tagline? A punchline is a short, striking, and persuasive sentence used mainly in advertisements to create a strong impact. It is usually used at the end of an advertisement to deliver the final persuasive message. Examples of punchlines like सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं. फेविकोल, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं. Difference between tagline and punchline. Tagline, a brand's permanent memorable phrase. Punchline, a short persuasive line used in specific ads. Purpose, tagline represents the brand identity. Punchline creates a strong impact in a particular ad. Uses, tagline is used in every
advertisement of the brand. Punchline is used only in individual ad campaigns. Duration: long-term and stable. Punchline is short-term and changes with each ad theme. Example of tagline: just do it of Nike. Punchline: दाग अच्छे हैं of Surf Excel. So a tagline is the brand's identity phase, while a punchline is a catchy, persuasive message used in a specific advertisement to create impact. Next, what are jingles? Write their meaning and role in advertising. Jingles are short, catchy, musical phrases or tunes used in advertisements. They combine music plus words to make the ad memorable and attractive. Easy to remember. Jingles stay in the mind because of their rhythm and tune. Helps customer recall the brand quickly. Next, creates emotional connection. Music creates feeling of joy, nostalgia or excitement. Makes the ad more enjoyable. Used in audio and video ads. Popular in TV commercials, radio ads and social media videos. Examples of famous jingles: Nirma, washing powder Nirma. Airtel, iconic music tune. Vodafone, Zuzu theme music. Next, role of jingles in advertising. Enhances brand recall. Customers remember the product because of the catchy tune. Next, attracts attention quickly. Musical ads stand out more than normal spoken ads. Next, strengthen brand identity. A unique tune becomes the brand's signature sound. So, jingles are musical advertisement messages that increase brand recall, attract attention, and create a lasting impression on consumers. Unit 4. Market research. First, what is media planning? Define. Media planning is the process of deciding which media like TV, newspaper, online, radio, etc. should be used to advertise a product. It involves choosing the best media, time, and frequency to reach the target audience effectively. तो जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करता है तो ये डिसाइड करना होता है कि कौन से मीडिया से हम लोग एडवर्टाइज करेगा. मतलब टीवी में करेगा, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन, रेडियो, कौन सा मीडिया यूज करना है. इसी प्रोसेस को हम लोग मीडिया प्लानिंग बोलता है. Ensures best use of budget. Helps select the most cost-effective media to reach maximum customers. Involves careful decision making. Media planners decide where, when, and how often the advertisement should appear. Aims at maximum reach and impact. Ensures the advertisement reaches the right audience at the right time. Next, what are the steps in media planning? Media planning is a step-by-step process to select the best media and schedule advertisements effectively. So, steps in media planning. First, determining advertising objectives. Decide what the advertisement wants to achieve. Is it awareness, sales increase, brand recall, etc. Next, identifying the target audience. Understand who the ad is meant for. Age, income, location, interest, buying behavior. Next, selecting the media type. Choose the most suitable media. TV, radio, newspaper, social media. Depends on audience and budget. Next, media scheduling. Decide when and how often the ad will appear. Continuous, flighting, or pulsing schedules. Next, evaluating media performance. After the campaign, check if goals were achieved. Helps improve future media plans. So, media planning involves setting objectives, identifying audience, choosing media, scheduling ads, and evaluation to ensure effective advertising. Next,
what are the factors influencing media planning? Media planning depends on several factors related to the product, audience, cost, and media characteristics. Factors influencing media planning. First, nature of the product. Technical or industrial goods need specialized media. FMCG products require mass media like TV, radio, and newspapers. Next, target audience. Age, income, location, education, and lifestyle influence media choice. For youth, social media. For elders, newspapers or TV. Next, advertising budget. A large budget allows use of TV or digital ads. A small budget may prefer print ads or radio. Next, media characteristics. Media reach, frequency, cost, flexibility, and credibility affect selection. TV has high impact but high cost. Next, timing and season. Festival seasons, special events, or peak sales period require stronger media presence. Seasonal products require seasonal media planning. So, media planning depends on product type, target audience, budget, media features, and timing, ensuring effective use of resources. Next, what is media mix? Define with examples. Media mix refers to the combination of different advertising media used in a promotional campaign. It helps reach a larger audience more effectively by using multiple media platforms. तो मीडिया मिक्स के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया का यूज करता है इन ए प्रमोशनल कैंपेन, जो कि एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करता है. और कैसे? बाय यूजिंग मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्रीजेस रीच एंड इम्पैक्ट. यूजिंग डिफरेंट मीडिया, टीवी प्लस न्यूज़पेपर प्लस सोशल मीडिया helps reach various types of customers, reduces dependence on one media. If one medium fails, the others still deliver the message, ensures better communication. Different media highlight different aspects. Visuals on TV, details in newspaper, quick reach on social media. Examples of media mix. Example 1. A company uses TV ads plus YouTube ads plus newspaper ads for a new product. Example 2. A shop uses posters plus local radio plus WhatsApp promotions for festive sales. Next, what is media scheduling? Explain its type. Media scheduling refers to deciding when, how often, and for how long an advertisement will be shown in a selected media. It ensures the message reaches the audience at the right time. तो मीडिया शेड्यूलिंग के अंदर हम लोग ये डिसाइड करता है कि एडवर्टाइजमेंट व्हेन, हाउ ऑफन एंड फॉर हाउ लॉन्ग दिखाया जाएगा इन ए सिलेक्टेड मीडिया. टाइप्स ऑफ मीडिया शेड्यूलिंग. फर्स्ट, कंटिन्यूअस शेड्यूलिंग. एडवर्टाइजमेंट रन्स रेगुलरली throughout the year, suitable for daily use products like toothpaste, soap, milk, biscuits. Features: continuous brand reminder, stable advertising pattern. Next, flighting scheduling. Ads are shown in intervals. High advertising for a period, then no ads for some time. Suitable for seasonal products like umbrellas, woolens, air coolers. Features: saves cost, good for seasonal demand. Next, pulsing scheduling. A mix of continuous plus flighting. Ads run continuously but stronger during peak seasons. Suitable for products with year-round demand plus seasonal peaks like soft drinks, chocolates, travel packages. Features: balanced approach, more impact during peak sales. Next, what is media testing? Write its meaning and purpose. Media testing is the process of
checking and evaluating different media, TV, print, digital, etc., to find out which one works best for an advertisement. It helps determine which media brings the maximum response, reach and effectiveness. तो मीडिया टेस्टिंग के अंदर हम लोग डिफरेंट मीडियाज को चेक और इवैल्यूएट करता है, लाइक टीवी, प्रिंट, डिजिटल एक्सेट्रा। और किस लिए? ये फाइंड आउट करने के लिए कि विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। और इससे हम लोग ये पता कर सकता है कि कौन सा मीडिया मैक्सिमम रिस्पॉन्स, रीच या फिर इफेक्टिवनेस लेके आ रहा है। पर्पस ऑफ मीडिया टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मीडिया helps find out media which gives best result for the product or target audience. Next, to reduce advertising waste, avoids spending money on media that does not perform well. Next, to improve ad effectiveness, ensures that the ad reaches the right people at the right time through the right channel. Next, to compare media performance, it tests different media options like TV versus YouTube, newspaper versus radio to choose the most effective one. Next, what is an advertising budget? Define. An advertising budget is the total amount of money a company sets aside for all advertising and promotional activities. It includes expenses for media selection, ad creation, printing, broadcasting, digital ads and agency fees. तो एडवर्टाइजिंग बजट मतलब यहां बात हो रहा है बजट के बारे में, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि कोई कंपनी सेट करता है फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। और इस बजट के अंदर वो सारा एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है, जैसे कि मीडिया सिलेक्शन, एड क्रिएशन, प्रिंटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल एड्स एंड एजेंसी फीस। प्लानिंग टूल helps decide how much the company will spend on different advertising activities. Next, ensures cost control, prevents overspending and ensures money is used efficiently. Next, supports media planning, determines which media like print, TV, online can be used based on available funds. Next, what is the importance of an advertising budget? An advertising budget ensures proper planning, control and execution of all advertising activities. Importance: ensures proper use of funds, helps avoid overspending or wastage, ensures money is used where it gives the best results. Next, guides media selection. Budget decides which media like TV, newspaper, digital, radio can be used, helps create an effective media plan. Next, helps in planning campaigns, determines the scale, duration and frequency of advertising, supports long-term promotional strategy. Next, improves coordination, helps coordinate with advertising agencies, media house and production teams. Next, measures performance. Companies can compare actual spending versus planned budget, helps evaluate the success of the advertising campaign. So, an advertising budget is important because it ensures effective planning, cost control, proper media selection and successful execution of advertising campaigns. Next, what are the steps in preparing an advertising budget? Preparing an advertisement budget is a systematic process to decide how much money should be spent and where. Steps in preparing an advertising budget: setting advertising objectives, decide what the company wants to achieve through advertising, brand awareness, sales increase, new product launch, etc. Next, estimating advertising costs. Estimate the cost of media,
TV, radio, online, designing, printing, production, and agency fees. Next, choosing the budget method. The company may use percentage of sales method, competitors method, objective and task method, affordable method. Allocating the budget. Distribute the total budget across different media, location, time periods, and campaigns. Next, reviewing and control. Compare actual expenses with the planned budget. Make corrections if overspending or underspending occurs. So, preparing an advertising budget involves setting objectives, estimating costs, choosing a method, allocating funds, and reviewing performance. Next, what is market research? Define. Market research is the process of collecting, analyzing, and interpreting information about customers, competitors, and the market. Its purpose is to help businesses make better marketing and advertising decisions. तो मार्केट रिसर्च एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है. किसके बारे में? कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड द मार्केट. और इसका पर्पस क्या है? टू मेक बेटर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिसीजंस. किसके लिए? बिजनेसेस के लिए. Helps understand customers, collects information about customer needs, preferences, income, habits, etc. Supports marketing decisions. Helps decide product design, pricing, promotion, and distribution. Reduces business risks. Provides real market data, preventing guesswork and mistakes. Next, what are the importance of market research? Market research helps a business understand the market, customers, and competition, leading to better decisions. Importance of market research. Understand customer needs. Helps identify what customers want, their preferences, income, and buying behavior. Next, helps in product development. Guides companies in designing products that match customer needs and market trends. Next, supports advertising and promotion decisions. Helps decide the right message, media, and target audience for advertising campaigns. Reduces business risks. Provides real data instead of assumptions. Helps avoid launching unsuccessful products. Next, understand competition. Provides information about competitors' products, prices, and strategies. So, market research is important because it helps businesses make informed decisions, understand customers, reduce risks, and stay ahead of competitors. Next, explain the market research process. The market research process is a step-by-step method used to collect and analyze information about the market. Market research process. First, identifying the problem. Clearly define what the business wants to know. Example, why our selling decreases? What do customers prefer? Next, designing the research plan. Decide what information is needed and how to collect it. Choose methods like surveys, interviews, or observations. Next, collecting data. Gathering information from customers, market, competitors, retailers, etc. Data can be primary or secondary. Next, analyzing the data. Arrange, compare, and interpret the data. Helps find patterns and answers to the problem. Next, preparing the report. Presents finding in a clear report with charts, tables, and conclusions. Next, making decisions. Use the research report to take decisions. Improve product, change pricing, modify aids, etc. So, the market research process includes problem identification, research design, data collection, analysis, reporting, and decision making to help businesses act wisely.
Next, what are the techniques of market research? Market research uses different techniques to collect information from customers and the market. These techniques are divided into primary and secondary methods. Primary research techniques: data collected directly from the original sources. And secondary research techniques: data collected from existing sources. तो पहले देखता है प्राइमरी रिसर्च टेक्निक्स. सर्वेज एंड क्वेश्चनेयर्स. Surveys and questionnaires. Customers are asked questions through forms, online surveys, or face-to-face. Fast and widely used. Next, interviews. One-to-one discussions with customers to understand their opinions in detail. Next, observation. Watching customer behavior in shops or markets. Useful to study real buying patterns. Next, experiments or test marketing. Launching a product in a small area to test customer response before full launch. अब देखता है secondary research techniques. Government reports, census data, economic surveys, RBI reports. Next, industry reports and journals. Trade magazines, company publications, industry analysis reports. Next, websites and online databases. Google Trends, market statistics, published research. Next, company records, past sales data, customer complaints, product performance records. So, market research uses surveys, interviews, observation, experiments. These are primary research techniques. And reports, journals, online sources, company records, these are secondary research techniques to understand the market effectively. तो चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं. वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.